हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 9 के चैप्टर 1 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के थर्ड सेक्शन के पार्ट फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि किस तरह से फ्रांस में मोनार्की खत्म की गई, यानी कि द रूल ऑफ अ हेरिडिटरी रूलर, हेरिडिटरी किंग केम टू एन एंड, और किस तरह से वहां पर द पीपल और यू कैन से द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशनल असेंबली, किस तरह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रांस में अब एक इलेक्टेड head of the state होगा, because we know that republic is a kind of system, political system, a system of governance जहां पर head of the state is always elected by the people. He is never been a, you can say, hereditary ruler like the king. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से वहां पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया इन 1791 बाय द नेशनल असेंबली, उसको इंप्लीमेंट किया गया, एंड एट द सेम टाइम सीइंग द प्रेशर ऑफ द पीपल, हिज सब्जेक्ट्स, जो किंग था फ्रांस का, उसने भी इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, उसको अपनी मंजूरी दे दी थी। यानी कि वो इस बात के लिए तैयार हो गया था कि अब वो कंट्री पर रूल करेगा एज पर द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फ्रांस के अंदर इसके बाद भी सिचुएशंस पूरी तरह से सामान्य नहीं थी। दैट मीन्स द life was not at all normal. Situations were not normal. The tension was still there. हालांकि जो किंग लुई 16 था, he had agreed, he had given his consent that he would be going to rule the country as per the limits set by the Constitution of 1791. उसने ये अपनी मंजूरी दे दी थी कि वो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही कंट्री को रूल करेगा, उसकी जो लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कंट्री को रूल करेगा। लेकिन उसकी ये जो मंजूरी थी, ये जो उसका कंसेंट था, ये केवल एक दिखावा था। इन रियलिटी ही डिड नॉट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ लिमिट्स टू हिज पावर्स। रियलिटी में वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लिमिटेशंस हो, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। एंड देयरफॉर ही हैड एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अलायंस विद द किंग ऑफ प्रशा। प्रशा जो उस समय यूरोप के अंदर एक बहुत पावरफुल स्टेट था, तो उसके किंग के साथ उसने एक सीक्रेटली अलायंस कर लिया। यानी कि जो प्रशा का जो किंग था, उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको अपना सपोर्ट करूंगा लोगों को सप्रेस करने में। एंड ऑल्सो देयर वर अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस इन यूरोप, जो फ्रांस में समर्स ऑफ 1789 से जो कुछ भी चल रहा था, यानी कि जुलाई 1789 से जो कुछ भी फ्रांस में चल रहा था, उन सभी इवेंट्स को जानकर जो फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे, वो भी बहुत ज्यादा चिंतित थे। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके देश के लोग भी फ्यूचर में फ्रांस की तरह से रिवोल्ट कर दें, फ्रांस के लोगों की तरह से रिवोल्ट कर दें, और शायद उनको भी अपने पावर्स गिव अप करने पड़े।
तो एक तरह का डर उनके मन में बैठा हुआ था। तो दे वर ऑल्सो प्लानिंग, वो भी क्या सोच रहे थे कि भाई हम जो है वो फ्रांस के अंदर जो लुई 16 है उसकी हेल्प करने के लिए हम भी अपनी आर्मीज को भेज देते हैं। तो दे वर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड देयर आर्मीज टू हेल्प लुई 16 इन फ्रांस। लेकिन ऐसा कुछ भी हो पाता उससे पहले नेशनल असेंबली ने क्या किया, अप्रैल 1792 National Assembly had voted and declared a war against Austria and Prussia. ऑस्ट्रिया और प्रशा ये दोनों यूरोप के अंदर पावरफुल कंट्रीज थे, पावरफुल स्टेट्स थे। तो नेशनल असेंबली ने इन दोनों ही कंट्रीज के खिलाफ, इन दोनों ही स्टेट्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। एंड व्हेन दीज वॉर्स वर डिक्लेयर्ड, thousands of volunteers from different parts of France, they began to come to Paris. They were all wanted to join the French army to fight the war against Austria and Prussia. हजारों लोग जो हैं वो वॉलेंटियर्स फ्रांस के डिफरेंट पार्ट से वो पेरिस में आने लगे, जिससे कि वो फ्रेंच आर्मीज में भर्ती होकर इस वॉर का हिस्सा बन सकें अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। क्योंकि इन वॉर्स को वो क्या सोचते थे, उनकी एक सोच थी कि ये वॉर क्या है, ये वॉर लोगों के वॉर्स हैं फॉर देयर राइट्स एंड ऑल्सो अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। दीज वॉलंटियर्स, ये जो वॉलंटियर्स आ रहे थे, दे वर फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स। ये सारे के सारे हमारे फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स थे, देशभक्ति की भावना में कूट कूट कर भरी हुई थी। दे वर singing so many patriotic songs. The most important them was Marseillaise. Marseillaise, this was a patriotic song composed by a poet, Rosette d'Alise. And it was for the first time sung by the people for Marseillaise. That's why it got its name, Marseillaise. It is now the national anthem of France. So, let us discuss about the events here. First of all, what do we find? King of France, King Louis 16. Louis 16 entered into a secret alliance with the King of Prussia, to win back his powers with his support. Kings from other neighboring countries were also planning to send their troops
their troops their troops to help Louis XVI. Louis XVI. But before this could happen, before this could happen, the National Assembly declared a war against Russia and Austria. Thousands of volunteers began to come and enter in Paris so that they could join the French Revolutionary Armies. French Revolutionary Armies. Right? They were full of patriotic feelings, singing many patriotic songs, many patriotic songs. The most important, the most popular among them was Marseillaise, composed by the poet Roger de Alizal and sung by the people from Marseilles. That's why it got its name, Marseilles. And this is now the national anthem of France. It is now the national anthem of France. Right? So the Revolutionary Wars began in 1790s, or obviously the people, they were looking at these wars as the war of people against the autocratic monarchies. ये जो revolutionary wars थे, they had brought a lots of hardships. So these revolutionary wars brought so much hardships and economic crisis
economic crisis in the life of people. In the life of people. What happened during this time? Men, obviously they were fighting the war, they had joined the armies and they were at the fronts to fight the war. अब घर पर कौन रह गया? Women. Women now take up the responsibilities in dual sense. First of all, they had now to step out from their homes to work so that they could earn the bread for their families. And together with that, they were having the responsibility to look after the children as well as the old people, old member, the aged members within their families. So, since men went to fight the war, to fight wars at front, women took up the responsibility of earning bread for the family, for the families, as well as to look after the children and old members of their families. और पूरे फ्रांस में अब लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या जो दायरा है रेवोल्यूशन का उसको क्या और बढ़ाया जाना चाहिए, बिकॉज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 more importance was given to those who were prosperous and who were owned land. और इस चीज में यानी कि इन सभी पर डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ. पॉलिटिकल क्लब्स दे begin to form to discuss whether the idea of revolution was to be extended or not. और इन सभी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था दैट वाज द क्लब ऑफ जैकोबिन्स. सो political clubs begin to set up to discuss the issue whether idea of revolution was to be carried further, because by the constitution of 1791 the right to vote was given to only
prosperous people. Prosperous people. Women, they too had their own political clubs. The most important among them was the Jacobins, which got its name from former convent of Paris, Saint Jacob. Its leader, इसका लीडर कौन था? Its leader was Maximilian Robespierre. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो इसका कौन था? इसका हेड था, इसका लीडर. Now the members of the Jacobins club, they were belong to the less prosperous sections of the society. Members of the Jacobins club belonged to the less prosperous sections of the society that include workers, artisans like watchmakers, then potters, etc. राइट यानी कि ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो हमारे क्या थे? जैकोबिन क्लब के. वो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते थे, जिसमें आपके वॉच मेकर्स थे, पॉटर्स थे, कॉबलर्स थे, पेजेंट्स थे. राइट. द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स क्लब began to wear long straight trousers, similar to dock workers. यानी कि डॉक्स पर जो काम करने वाले जो लोग होते थे, पोर्ट्स पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे, उनकी तरह से उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिक्ट ट्राउजर्स को पहनना शुरू कर दिया. दिस वॉज वन वे दे वर वांटेड टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम द नोबल्स इन द सोसाइटी. एंड दे came to be known as sans-culottes. That means without knee breeches. इसका मतलब क्या था? विदाउट नी ब्रीचेस. क्योंकि जो हमारे नोबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे
नोबल्स जो थे उससे पहले वो क्या करते थे, हाफ, आप कह सकते हैं अप टू नीज वो ट्राउजर्स पहनते थे. बिसाइड्स दैट they also began to wear red caps, red caps to symbolize liberty. Right? Women were not allowed to wear red caps. This was only for men. Now, what happened in summers of 1792? The prices of bread in Paris, they began to increase. और ऑब्वियसली यहां पर जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च, एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इन द समर्स ऑफ 1792 with the people of Paris against the increasing prices of bread, shortage of food and increasing prices. So in summers of 1792, the members of Jacobin Club, members of the Jacobins Club organized an insurrection of Parisians against shortage of food, and rising prices of bread. तो यहां पर समर्स ऑफ 1792 जो मेंबर्स थे जैकोबिन्स क्लब के, उन्होंने अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस एज वेल एज द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, उन्होंने जो है एक इंसरेक्शन, एक बहुत बड़ा सा मार्च उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. नाउ ऑन 10th April, on 10th August, sorry, not April, on 10th August, a large number of Jacobins, a large number of Jacobins attacked over the king's palace at Tuileries. टुलेरिस में जो राजा का जो महल था उस पे उन्होंने अटैक किया, killed the palace guards, and held the king as hostage for several hours. कई घंटों तक उसको जो है वो बंदी बनाकर रखा. Later the assembly voted for imprisonment
imprisonment of the royal family. रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया. Elections were held in which all men aged 21 years and above were given the right to vote. ठीक है, यानी कि अब यहां पर प्रॉपर्टी वाइज नहीं, उन्होंने सभी मेन जिनकी एज 21 ईयर्स एंड अबव थी उन सभी को वोट देने का राइट उनको दिया. द न्यूली इलेक्टेड assembly was called convention on 21 September 1792. It abolished monarchy and declared France a republic. 21 September 1792 ये वो दिन था जब जो नई असेंबली थी जिसको कन्वेंशन कहा गया, इसने फ्रांस से मोनार्की को एबोलिश करने की घोषणा की और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया. द किंग was sentenced to death by the court on charges of treason. उस पर देशद्रोह का आरोप लगा और उस आरोप में उसको मौत की सजा दी गई. On 21 January 1793 he was publicly executed at a place de la Concorde. इस जगह पर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया. लेटर ऑन उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, शी वॉज ऑल्सो मेट द सेम फेट. सो विद दिस पार्ट ऑफ सेक्शन 3 कम्स टू एन एंड. इसमें बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से फ्रांस में मोनार्की एबोलिश हुई और फ्रांस जो है एक मोनार्क एक किस से किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें, रिपब्लिक. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रेन ऑफ टेरर, दैट मीन्स हाउ द जैकोबिन्स, क्योंकि अब पावर किसके हाथ में है, जैकोबिन्स के हाथ में है. तो आगे क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किस तरह से कंट्री को रूल किया, यानी कि रेन ऑफ टेरर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम रूल ऑफ डायरेक्टरी को डिस्कस करते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और पूरा टॉपिक भी आपको समझ में आएगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू कमेंट ओवर इट एंड सेम अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको रेगुलरली नया वीडियो कोई भी अपलोड होता है तो यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशंस. Thank you and have happy learning ahead.